Good evening, everyone. I'm sorry, I was just plugging in if I want to write down something that is. Very good to see you. Hi, Gargi, Sanchari, Hasika, Udit, Maitri. Very good to see you guys. So, today's discussion is about something that happened a few days back. And now, of course, the results are also out. Hi, Sindhuja, how are you doing? And we've had some very awesome results, including All India Rank 1, Rank 3, Rank 5. Rank 1, of course, is a test series student, but well, it was good to have him give a few tests. And I've been speaking with Rishabh, and he's definitely very pumped to come to Lucknow and have a few conversations with us. So are some of our classroom students. Um like we have Jai Bajrang Bali. सही है भाई. Good evening, Gunjan, Gauri, Sejal, Anjane, is that? Yeah, I think I'm pronouncing that right now. Um, good to see all of you guys. Anyway, in a couple of days on YouTube also you will have all of their conversations and their suggestions. But before the madness descends and all the successful students from this year have their conversations about how to go about the paper, I thought I'll bring you my lessons from CLAT 2022. Particularly, what are some of the interesting changes, if any? I thought there was not too much deviation from how the paper usually happens. Um, but still, there are some important things to keep at the back of our mind for those of us who are preparing for the coming months that are ahead of us. I'm sure some of you have the paper in in December. Some of you are probably preparing for the year after that. One way or the other, जो भी इस साल की important चीजें हैं वो हमें definitely ध्यान में रखना चाहिए. For those of you who are meeting me for the first time, not too many people I see, but I'm sure some of you who are watching. My name is Devajyoti Das. I take up legal aptitude here at Clat Possible, and I think जो सबसे interesting आप सबके लिए होगा वो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पर, that I had also managed to clear NLS Bangalore. मेरा भी किसी तरह से तो क्या मेहनत मेहनत की थी obviously. I had also gotten an All India Rank 20 in the NLS Bangalore entrance way back in 2006. Right, सर महान गुरु, अरे अरे क्या बात है. आपको भी प्रणाम भाई. मानसी तनिषा, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. राइट. अरे बाप रे बाप इतना. Okay, by way of a quick introduction, what did this year's paper look like? There was really no major deviation in terms of, when I say deviations, I mean the pattern, right? जो हमारा पिछले साल का और पिछले के पिछले साल का पैटर्न रहा है, particularly after CLAT 2019, उसके बाद से ही पैटर्न चेंज हो गया था. So 2020 as well as 2021 we had some very standard kind of questions, standard kind of pattern, right? And it's on the same lines. उसी तरह से हमारा जो इस साल का एग्जामिनेशन रहा, it's not too much of a deviation from that, right? सर रुपया CCT की तैयारी करवा दीजिए. ओके. अरे अरे भाई भाई, मेरा सेवक वेवक तो होने की क्या ही जरूरत है. देश की सेवा करो, अपने आप हमारी और सबकी भी सेवा हो जाएगी. CUCET, well, I don't know what stream you're coming from, और क्या क्या कहते हैं उसको, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपको अलग से पेपर देना होगा. बाकी वही स्टैंडर्ड इंग्लिश और बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इसी टाइप के ही क्वेश्चंस हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो आई अज्यूम आप उस डायरेक्शन में अपनी तैयारी ऑलरेडी करके चल रहे हो. सो लेट्स सी, कुछ और स्पेसिफिक वगैरह होगा तो हम लोग उसको डिस्कस डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे. आई हैव टेकन अ नोट ऑफ इट. आई विल पास ऑन दैट इंफॉर्मेशन
to our relevant academic teams. Right, as is the case in the last couple of years, we had the standard 150 questions and we had the standard 120 minutes, which means speed continued to be a challenge. Right, speed definitely continued to be a challenge. इस बार भी थोड़ा सा reasonably lengthy paper था. Right, so but I'll come to it. It was of course an offline paper. एक आध क्लैट बीच में ऑफलाइन से ऑनलाइन किया गया था, एज यू कैन इमेजिन, मोस्टली बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, लॉकडाउन और ये वो जो भी सबको वो संघर्ष तो पता ही है. उसी वजह से एक आध साल हमारे बीच में ऑनलाइन पेपर भी रहे, बट वी आर बैक टू द ऑफलाइन पेपर, विच मीन्स द स्ट्रेटजीज जो आपके बनने हैं या बनाने चाहिए वो सब कुछ उसी अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है. कौन से सेक्शन से शुरू करें, कौन सा सेक्शन बीच में करें, ओएमआर के लिए अलग से कितना टाइम मिलता है भरने के लिए, वो उसी 2 घंटे में भरना है, बाय द वे. एंड दिस इज अ फीडबैक जो इट्स अ फीडबैक दैट आई गॉट फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स. In all the centers we had that common problem. The common problem being the fact that यूजुअली हमारे मॉक्स में हम लोग ओएमआर देने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देते थे, राइट, वेयर यू वुड गेट टू लाइक fill up the OMR with your roll number and other things, name भरना है, center भरना है, center code भरना है, stuff like that. But it turns out कि in the same 120 minutes, राइट, उसमें अलग से कोई टाइम जो 2-3 मिनट का या 5 मिनट का फर्क पड़ता है, that time was definitely not given to the students. Students were expected to fill up their name and other details जो OMR में भरना है within the same 120 minutes. So effectively the paper became like 115 minutes. So there was additional speed challenge in this year's examination. And of course, it was all objective questions, no subjective. Way back in 2005, 2006, जब मैं entrance दे रहा था, that time we did have some objective questions and some subjective questions. Particularly LLS Bangalore में, नालसार में, some of these top law schools, they definitely had a subjective section. HNLU had a subjective section. But जब से क्लैट आया, of course subjective का पूरा discussion ही हट चुका है, and now of course we have all objective questions. It was +1 mark for every correct answer and minus 0.25 for every incorrect answer. That's how the whole examination basically kind of looked like. Now, as far as legal aptitude is concerned, and that's what I want to talk about in this particular discussion in the next few minutes that we have. First of all, I'm sure a lot of you are wondering about what the hell just happened in the AILET examination, right? It's not only the CLAT, but CLAT के थोड़े दिन बाद AILET का भी examination हुआ था. 19th को CLAT था and एक हफ्ते बाद हमारा AILET का examination था. AILET का result तो अभी भी आना बाकी है, CLAT का आ चुका है. In fact, the CLAT का merit list is expected to come out on the 30th of June. But AILET had a major surprise as far as legal aptitude is concerned. एक तो legal aptitude का section वो लोग पहले ही हटा चुके थे, right? But they did say logical reasoning, right? जो logic का section होगा, particularly AILET में, they said logic के section में principal fact based questions भी आएंगे, right? So everybody was kind of expecting कि AILET में चलो सेक्शन का नाम हटा दिए, बट लॉजिकल रीजनिंग में ही बहुत सारे लीगल के क्वेश्चंस आएंगे. बट नाउ लीगल बेस्ड डिडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चंस जरूर आए थे, अराउंड आई थिंक अराउंड 6-7 ऑफ दोज क्वेश्चंस. बट जो डायरेक्ट प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चंस है, व्हिच हैज बीन द हॉलमार्क ऑफ द AILET एग्जामिनेशन this year, at least, it was a major deviation in the AILET exam. NLU Delhi अगर आपको जाना था तो लीगल एप्टीट्यूड के आई थिंक सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही आए थे. So it is obviously not something that I would say कि ये अब CLAT में भी आप यही एक्सपेक्ट करिए, right? Because CLAT में इस बार भी the biggest section that was there was the legal aptitude section.
सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी सेक्शन में आए थे तो वो लीगल एप्टीट्यूड का ही सेक्शन था. सिमिलरली आई थिंक लीगल एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट महाराष्ट्र सीईटी में भी आएगा. लीगल एप्टीट्यूड बीएचयू में, सिम्बायोसिस में, एलसैट एंड एलेट, राइट. एलसैट जो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल वगैरह का एंट्रेंस है, उसमें भी there we did not have too many, I mean we don't have any legal aptitude questions. But CLAT may, of course, legal aptitude continues to be very, very important. Now, in the legal aptitude section, constitutional law continues to be the king, right? Constitutional law continues to be the king as far as the CLAT exam is concerned. क्योंकि क्लैट एग्जाम में जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हमारे आए थे, वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में the most popular area, at least I think about 2 to 3 passages were based on 3 passages I think were based on constitutional law. There were a couple of passages from family law. Very surprisingly, in this year's CLAT, usually अगर family law वगैरह से आता भी है, miscellaneous areas, हम जिसको कहते हैं broadly, I refer to them as miscellaneous, right. अब miscellaneous जो बेसिक जो हमारे 4 हैं, वो तो क्या है, कॉन्स्टी है, कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, क्रिमिनल लॉ है, एंड ऑफ कोर्स टॉर्ट है. ये 4 तो मेन हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ही. मिसलेनियस में हमारा आता है फैमिली लॉ, राइट. वी हैव फैमिली लॉ, वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो हमारा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह है, एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लॉ is also something that I would generally classify as miscellaneous. But I think the element of surprise, I think the students who were prepared, जो हमारे classes attend किए हैं, या हमारे mocks दिए हैं, right, whether you've taken the Clat Possible test series or if you've taken the classroom program, which means आप test तो obviously सारे दोगे ही फिर. इन दोनों में से कुछ भी किसी ने लिया है तो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सारे एरियाज हमने पढ़े जरूर हैं. बट इंटरनेशनल लॉ में फॉर एग्जांपल बहुत ही जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड पैसेज था अबाउट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल, लाइक मोनिज्म एंड डुअलिज्म, which is about how international law becomes part of domestic law, right. इंडिया में फॉर एग्जांपल हमें स्पेसिफिक अडॉप्शन का एक थ्योरी है, वो हम फॉलो करते हैं. That means कि इंडिया में if we want to apply international law, then the parliament has to make a separate law which kind of adopts that law. US on the other hand directly has the doctrine of incorporation, right, कि वो अपने आप ही international law उनके domestic law का part बन जाता है. But this is a theoretical area which usually I don't discuss in the classes, but those of you who have prepared sincerely and attended all the lectures etc, बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ होगा. फैमिली लॉ में स्पेशल मैरिज एक्ट का भी था, एंड सो देयर वर 2-3 पैसेजेस इन फैक्ट जो मिसलेनियस एरियाज में से ही आया हुआ था, राइट. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड द बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इवन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एंड सो ऑन. सो बहुत सारा सरप्राइज डेफिनेटली नहीं था, right. The legal section definitely was not a very surprising paper, except 1 or 2 areas. There was one passage which I thought it was very little of law, like environmental law pe tha and sustainable development pe tha. That whole passage, it will look like more of a reading comprehension passage than a passage which should come in the legal aptitude section. But ठीक है, वो अंग्रेजी आती है, इंग्लिश खेलना आता है, तो that passage also is not something you would have too much of a problem with. It was a healthy mixture at the end of the day. It was quite a healthy mixture. Generally बहुत सारे areas से questions आए थे, like I said, from constitutional law to international law to family law to environmental law and sustainable development and stuff like that. So it's a very kind of wide area. Again, not very very surprising, very standard. अगर surprise कहीं था तो वो definitely AILET में था, right. But last but not the least, I think जो सबसे important lesson है from from this year's CLAT exam, the most important lesson to learn from this year's CLAT exam
is definitely the length of the paper, right? In fact, last year also you would probably have learned similar lessons. ये जो last वाला part है that you have to read, read and read. जितना ज़्यादा आप अपना reading speed बढ़ा पाएंगे, जितना ज़्यादा आप बाकी इस type की चीजें बढ़ा सकते हैं, that is something which I would certainly believe is the most important aspect, because RCs भी काफी lengthy थे. Critical reasoning was also reasonably difficult. GK was completely out of the box. वो तो आप लोग डिस्कस कर ही रहे होंगे. I'm sure you've already seen our analysis of the GK section. You've seen the results and so on. So I think the most important lesson to learn is two things, just two things. मेक श्योर आप अपने बेसिक कोर्स वर्क की तैयारी जो है, दैट्स कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल टॉर्ट, फैमिली लॉ, आईपीआर, इंटरनेशनल लॉ, ये जो 7 एरियाज हैं, ये 7 एरियाज पे आपको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत फंडामेंटल डेप्थ के साथ तैयारी करनी चाहिए. यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद दीज 7 एरियाज एटलीस्ट, and you should completely continue to focus on reading speed, which is, I think, by far one of the most important aspects of this year's examination. Right now, that's, I think, the most important lessons that I think you can learn from this year's CLAT, particularly this year's legal aptitude section, right? Kamakshi says, how should we study from the bare acts? हाउ शुड यू स्टडी फ्रॉम बेयर एक्ट्स? वेल, आई थिंक सिर्फ 3 ही बेयर एक्ट आपको पढ़ने की जरूरत है. वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बिकॉज वेल, आई मीन, लीगल लैंग्वेज की आदत पढ़नी चाहिए और ये सारी चीजें होनी चाहिए. देयर आर 2 more बेयर एक्ट्स which I think all of you should read, right? 3 बेयर एक्ट्स मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए as far as बेयर एक्ट्स आर कंसर्न, क्योंकि वही स्पेसिफिक क्वेश्चन है. Let me just say that you need only 3, right? Only 3 bare acts are needed, right? क्या 3 है? Number 1, constitutional law, Constitution of India आपके पास होना ही चाहिए. Second is IPC, right? And third is the Indian Contract Act, ICA, or the Contract Act. अब इसमें से why I am saying you need to know these 3, and out of these 3 also, प्लीज रिमेंबर कि आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो 2 हैं, इन दोनों से आपको क्या सीखना है? इन दोनों में वैसे सेक्शंस याद रखने की या रटने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट आर गिवन. लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जिसको एग्जांपल्स बोलते नहीं, उसको क्या बोलते हैं? इलस्ट्रेशंस, राइट? इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं किन दोनों में? इन दोनों में, राइट? आईपीसी में और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. इन दोनों में जो इलस्ट्रेशंस फ्रॉड का हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और you can look at the illustrations for theft, culpable homicide, murder. A lot of these provisions have specific illustrations, and a lot of times what happens, the CLAT will simply convert that example or that illustration into an actual question, और उसी को वो क्वेश्चन बना के आपको पूछ लेंगे. तो अगर वही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बेसिकली यू शुड ऑलरेडी नो द आंसर, क्योंकि वैसे भी करेक्ट आंसर वही होगा जो एक्ट में डायरेक्टली दिया हुआ है कि ये होगा तो ये फ्रॉड है, ये होगा तो ये फ्रॉड नहीं है. अगर वही चीज क्वेश्चन में पूछ ही रहे हैं, then obviously the correct answer also will be according to what is given in the bare act itself. So IPC Contract Act illustrations के लिए पढ़िए. Constitution you should generally read, because fundamental rights, and sometimes they ask you article numbers also, like which article of the Constitution deals with impeachment of the President of India. ये impeachment of the president अलग से क्वेश्चन पूछा ही गया था. CLAT 2020 का जो सैंपल पेपर आया था उसमें देखेंगे तो they specifically asked this question. So I mean, they can ask them in the actual paper also, right? So the sample भी CLAT consortium ने खुद ही निकाला था. So that's again something that that you should keep at the back of your mind. So अगर bare acts की बात करें तो 3 ही bare act I think you should look at: Consti, IPC, Contract. उसमें से भी आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन वाइज रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बस इलस्ट्रेशंस आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट? सो that's essentially what I wanted to talk about, guys. We'll come with all of our blockbuster students. Like I said, all India rank 1, rank 3. Akshat is rank 5. He's all India rank 5, and he's also our classroom student.
तो इन सब का बहुत सारा जो इनपुट्स हैं, थॉट्स हैं, वी आर जस्ट कलेक्टिंग ऑल ऑफ देम, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू प्रिपेयर। कोई 12th के साथ दे रहा था, कोई 12th के बाद दे रहा था। Sarthak is also our classroom student, he's already ranked 23, and so many of these, he's the topper of Lucknow city and so on. So इन सब का जो inputs हैं वो भी हम आपके लिए बहुत ही जल्दी YouTube पर लेके आएंगे। Please do stay tuned in, guys. Thank you very, very much. In the meanwhile, have a lovely evening, everyone, and I will see you guys soon. Bye bye, and see you soon.